Good evening. In previous lecture, we started with the net income approach, and before starting with the net income approach, हमने कुछ assumptions लिए थे, and we were having 8 common assumptions which are applicable to all the four theories. And four theories are net income approach, net operating income approach, traditional approach, and Modigliani and Miller approach. And there are 8 assumptions, and 8 assumptions यहाँ पे हमारे पास में क्या है that first assumption is that there is only two type of capital, that is debt and equity. Then firm is having fixed capital employed, though we can change the capital structure, but we can't change capital employed. रिमेंबर ये सिर्फ थियरी जो चार थियरी है उनके लिए अजम्पशन है. इस चैप्टर में बिना थियरी वाले भी क्वेश्चंस आएंगे जिनमें ये सब अजम्पशंस एप्लीकेबल नहीं होंगे. वहां कैपिटल भी चेंज होगा, सब चीज होगा, डेट के साथ में प्रेफरेंस भी होगा, वो सारी चीजें होंगी. बट ये सिर्फ कहां तक के लिए, सिर्फ ये जो चार थियरी है उनके लिए अजम्पशंस है. देन इसके बाद में firm is having positive net income, practically we can have the losses also. Then all the net income will be distributed as dividend. There are no taxes, capital markets are perfect. Then behavior of investors is rational, and cost of debt is less than cost of equity. Thereafter we came to the formulas, and we have learned the formulas. First formula was for the value of firm, that is E plus D, and then the second formula is EBIT divided by KO. EBIT stands for earnings before interest and tax, and the KO is the overall or average cost of capital. Then after this, the KO is KD into D upon D plus E plus KE into E upon D plus E. That is the weighted average cost of capital. Net income is EBIT minus interest, and it is based on the assumptions that we have taken. Got it? Then अगर वो assumptions नहीं होंगी तो ये net income बदल जाएगा. जो हमारा normal profitability statement बनता है टैक्सेस प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करने के बाद में जो बचेगा दैट विल बी नेट इनकम. देन वैल्यू ऑफ इक्विटी इज नेट इनकम डिवाइड बाय केई, एंड द वैल्यू ऑफ डेट इज इंटरेस्ट डिवाइड बाय केडी. देन आफ्टर दिस द नेट इनकम अप्रोच, व्हाट वी हैव लर्न हियर, वी हैव टेकन वन एडिशनल अजम्पशन. सो अगर हमारे को नेट इनकम अप्रोच का अजम्पशन लिखना है तो उसमें 8 प्लस 1 9 अजम्पशंस हो जाएंगे. 8 जो कॉमन सबके लिए थे, प्लस 1 assumption is this, that is cost of debt and cost of equity will remain constant irrespective of change in capital structure. So what is this theory is, कैसा होगा कि as we increase the debt in capital structure, KD and KO are same, KD and KE are same irrespective of change in capital structure. So what happens here in this case कि KD कांस्टेंट है, केई भी कांस्टेंट है, एंड केडी इज चीपर, डेट इज चीपर देन इक्विटी. सो जैसे जैसे हम डेट बढ़ाएंगे कैपिटल स्ट्रक्चर में तो क्या होगा, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल बी डिक्रीजिंग. क्यों डिक्रीज करेगा? बिकॉज अगर मैं सस्ता सोर्स यूज करूंगा तो ऑब्वियसली मेरी जो एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड्स है वो कम हो जाएगी. इज इट क्लियर? देन इसके बाद में व्हाट इज हैपनिंग कि जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है दैट विल डिक्लाइन एज वी इंक्रीज द डेट इन कैपिटल स्ट्रक्चर, एंड एज वी आर इंक्रीजिंग द debt in capital structure, the value of firm will be increasing because the KO is decreasing. Value of firm का formula EBIT divided by KO, and there the value of firm maximum कहाँ होगी, where the debt is maximum 100%. Is it clear? So ये यहाँ पे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जब केडी 100% है तो डेट सस्ता है तो वहां पे क्यों मिनिमम हो जाएगा, एंड वैल्यू ऑफ फर्म विल बी मैक्सिमम. बट डजंट इट सीम्स कि कुछ तो गलत हो रहा है कि हम डेट बढ़ा रहे हैं और वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ रहा है. मतलब ये थियरी बोल रही है कि जितना ज्यादा लोन लो उतना अच्छा है. ठीक, यहां तो डेट के चक्कर में अडानी की ऐसी तैसी हो गई कि डेट ज्यादा लिया हुआ है. इज इट क्लियर? सो कहीं तो इस थियरी में फ्लॉ है, एंड इस थियरी का फ्लॉ दूर करने के लिए हमारे पास में नेक्स्ट थियरी आई, दैट इज नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच. सो पॉइंट नंबर 6, that is net operating
net operating income approach, net operating income approach. ठीक है, अब यहाँ पे जो नेट इनकम अप्रोच का जो बेसिक फ्लॉ है वो उसके एडिशनल अजम्पशन में कैसा है। लुक, जब हम डेट इंक्रीज करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर में तो क्या होगा। सो राइट एज पर नेट इनकम अप्रोच, as per net income approach, it was assumed that cost of debt in bracket KD and cost of equity in bracket KE will remain constant, irrespective of change in capital structure, irrespective of change in capital structure. But practically, if we increase the debt in capital structure, financial risk या हम बोल सकते हैं फाइनेंशियल लिवरेज ऑफ कंपनी will be increasing and as financial risk of company is increasing, risk of shareholders in company will also increase as risk of shareholders is increasing, he
he will demand more returns due to which cost of equity in bracket KE, cost of equity KE will be increasing as we increase the debt in capital structure. ठीक है. So what was happening in case of the net income approach? Net income approach में हमने क्या assumption लिया? We assumed that the cost of debt and cost of equity remain constant irrespective of change in capital structure. So जो cost of debt and cost of equity है वो constant रहते हैं irrespective of change in capital structure. But practically ऐसे नहीं होगा. When you increase the debt in capital structure, अब अगर हम debt increase करें capital structure में तो क्या होगा? Financial risk मतलब financial leverage of the company will be increasing. हमने पिछले ही चैप्टर में पढ़ा था कि अगर debt increase करा so fixed financial charges like interest will be increasing. अब इंटरेस्ट बढ़ेगा, फिक्स्ड इंटरेस्ट बढ़ेगा तो फाइनेंशियल रिस्क बढ़ेगी. अब अगर कंपनी की फाइनेंशियल रिस्क बढ़ेगी सो हु इज ओनिंग द कंपनी? इक्विटी शेयर होल्डर. ठीक. सो अगर कंपनी की रिस्क बढ़ी तो शेयर होल्डर की भी तो रिस्क बढ़ेगी. एंड इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारा जो बेसिक प्रिंसिपल है हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, लोअर द रिस्क लोअर द रिटर्न. ठीक है. सो एज ए इक्विटी शेयर होल्डर अगर मेरी रिस्क बढ़ रही है देन आई विल डिमांड हायर रिटर्न्स एंड द कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल बी राइजिंग. ये कांस्टेंट नहीं रहेगी. जो बेसिक अजम्पशन हमारा नेट इनकम अप्रोच में था वो बेसिक अजम्पशन ही गलत था वहां का. ठीक है. सो अब यहां होगा क्या? इन दैट सिचुएशन अगर हम यहां पे देखें ग्राफ में ड्रॉ करता हूं जैसा हमने पहले किया था. सो व्हाट इज ईयर? यहां पे अब क्या होगा कि हमारा रिमेंबर वन थिंग कि कॉस्ट ऑफ डेट तो कांस्टेंट ही रहेगा. कॉस्ट ऑफ डेट में चेंज नहीं हो रहा है. कॉस्ट ऑफ डेट विल बी कांस्टेंट. ठीक है. सो यहां पे हमने क्या करा? ऑन एक्स एक्सिस परसेंटेज ऑफ डेट इन कैपिटल स्ट्रक्चर, debt in capital, and on y-axis it is cost of capital. On y-axis it is cost of capital. ठीक. Got it. So यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा KD कांस्टेंट है. क्या कांस्टेंट है? कॉस्ट ऑफ डेट कांस्टेंट है. ठीक. बट कॉस्ट ऑफ इक्विटी कांस्टेंट नहीं है. जैसे जैसे हम डेट इंक्रीज करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर में
जैसे जैसे हम डेट इंक्रीज करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर में, हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल बी इंक्रीजिंग। ठीक है, क्यों इंक्रीज करेगा? ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमने रिस्क, डेट बढ़ाया तो हमने रिस्क बढ़ाई तो ऑब्वियसली कंपनी की रिस्क बढ़ी, मतलब शेयर होल्डर की रिस्क बढ़ी। शेयर होल्डर की रिस्क बढ़ी, so he will be demanding more return, and we have written the basic definition of the cost of equity is what? That the cost of equity is equal to the expectations of shareholder, and because his risk is increasing, so he will be demanding more return, so the cost of equity will rise. ठीक है, now the question comes that how much will be the rise in the cost of equity. So here the net operating income approach says that the cost of equity will rise in such a proportion that overall cost of capital remain constant. मतलब जो चीपर डेट है उसकी वजह से जितना हमारे को फायदा हो रहा है उस इफेक्ट को नलीफाई कर देगा इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, and ultimately the overall cost of capital will remain constant. Is it clear? So this is what the net operating income approach says. So write further. Right, as per net operating income approach, as per net operating income approach, cost of equity in bracket K will rise in such a proportion that it offsets the impact of cheaper debt in capital structure and overall cost of capital in bracket KO will remain constant irrespective of change in capital structure. ठीक है, सो क्या हो गया? when we increase the debt in capital structure, so उसकी वजह से क्या हो गया कि financial risk of the company increasing. If the financial risk of the company is increasing, then the risk of the shareholder is also increasing, and if the risk of shareholder is increasing, then he will be demanding higher return, due to which the cost of equity will rise. And the theory says that the cost of equity will rise in such a proportion that it offsets या फिर it nullifies the effect of cheaper debt in capital structure. So उसकी वजह से क्या होगा कि कई इतना बढ़ जाएगा कि जो सस्ते डेट का जो फायदा हो रहा था वो हमारा फायदा सब वो खत्म कर देगा, इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, एंड द क्यू विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक, अब होगा क्या? अब हमारे को वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला पता है,
व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द वैल्यू ऑफ फर्म? EBIT डिवाइड बाय Q. ठीक, एंड व्हाट वी नो, यहां पे हमें क्या पता है कि EBIT रिमेन्स कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. नाउ द KO is also constant. So numerator is constant, denominator is constant. It means the value of firm V is also constant. Means this theory says कि हम कैपिटल स्ट्रक्चर में कुछ भी चेंज कर लें उसकी वजह से वैल्यू ऑफ फर्म में चेंज नहीं होगा. Is it clear? So right as overall cost of capital in bracket KO is constant, therefore value of firm in bracket V is equal to EBIT divided by KO will also be constant, as numerator and denominator, numerator and denominator both are constant. ठीक है. सो EBIT कांस्टेंट है, ये हमारे को पता है. KO भी कांस्टेंट हो गया, सो द वैल्यू ऑफ फर्म कांस्टेंट हो गई. सो इसका मतलब क्या हो गया? एज पर नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, value of firm remain constant irrespective of change in capital structure. So right, therefore as per net operating income approach, value of firm remain constant या value of firm एक मिनट is independent of, है वही चीज, उसको जस्ट वर्डिंग independent of capital structure. ठीक है, मतलब ये सब जो है कैपिटल स्ट्रक्चर बदलने से कुछ वैल्यू ऑफ फर्म पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इट विल बी कांस्टेंट. ठीक है. सो बेसिकली क्या है, ये थियरी क्या बोल रही है कि अगर तुम्हारे को वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ाना है तो कैपिटल स्ट्रक्चर बदल के तुम वैल्यू ऑफ फर्म नहीं बढ़ा सकते. तुम कुछ और करो, जैसे जो कर रहे हो उससे और प्रॉफिटेबल बिजनेस करो ना. ठीक है. कि वो कैपिटल स्ट्रक्चर बदलने से कुछ नहीं होगा वैल्यू ऑफ फर्म. अगर वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ानी है तो दो काम कर सकते हो, या तो कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ाओ और पैसा लगाओ, साइज ऑफ बिजनेस बढ़ाओ. एक दुकान है तो दो दुकान खोलो, एक फैक्ट्री है तो दो फैक्ट्री खोलो. गॉट इट. सो उस केस में क्या होगा कि तुम्हारा वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ेगा. जब एक्चुअल में बिजनेस बढ़ा तभी तो वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ेगा ना. सिर्फ कैपिटल स्ट्रक्चर बदल दिया उससे वैल्यू ऑफ फर्म नहीं बढ़ेगा. या फिर जो बिजनेस कर रहे थे उससे ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस करो.
गॉट इट। मतलब से फॉर एग्जांपल पहले हम स्टील सेक्टर में थे, ठीक है। अब स्टील सेक्टर में रिटर्न कम है, तो हमने क्या करा, हमने दूसरा सेक्टर चूज किया जिसमें रिटर्न्स ज्यादा हैं, ठीक। सो ये सब कैपिटल स्ट्रक्चर बदलने से वैल्यू ऑफ फर्म चेंज नहीं हो सकता है। इज दिस क्लियर, गॉट दिस? ठीक है। देन अब इसके बाद में यहां पे जो हमारी पहली दोनों थेरीज आ गई, कौन सी, नेट इनकम अप्रोच एंड नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, इन दोनों में ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर अचीव करना पॉसिबल नहीं है। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच के हिसाब से तो कैपिटल स्ट्रक्चर इज इररिलेवेंट फॉर द वैल्यू ऑफ फर्म, कुछ फर्क पड़ता नहीं। और नेट इनकम अप्रोच में वो क्या बोल रहे थे कि जब वैल्यू ऑफ डेट बढ़ेगा तभी वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ेगी, और जब 100% डेट हो जाएगा तो वैल्यू ऑफ फर्म मैक्सिमम होगा। बट कैन वी हैव 100% डेट विदाउट एनी इक्विटी? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है ना। इक्विटी मतलब ओनर्स कैपिटल ना, लोन लेने वाला कोई तो होगा ना, किसी के पास में एक ही शेयर सही बट एक तो शेयर होगा ना, ठीक। सो व्हाट इज हियर कि अगर कोई ओनर ही नहीं है तो लोन ले कौन रहा है? इज इट क्लियर? सो क्या हो गया, ना तो नेट इनकम अप्रोच में वहां पे 100% डेट पे मैक्सिमम वैल्यू, बट 100% डेट पॉसिबल नहीं है, तो वहां वैल्यू ऑफ फर्म मैक्सिमम नहीं हो सकती। देन द सेकंड नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच तो बोलती है कि सब बेकार की बात है, इन सब से कुछ होता ही नहीं है। Now comes the third approach, that is traditional approach, ठीक है। Traditional approach is actually the combination of these two, इन्हीं को दोनों को थोड़ा सा मिला जुला के है। So right, traditional approach, traditional approach, ट्रेडिशनल अप्रोच या ट्रेडिशनल थियरी, ठीक है। सो व्हाट इट सेज, यहां पे ये जो थियरी है ये क्या बोलती है कि अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, तो क्या तुम्हारे को रिलायंस इंडस्ट्री का डेट इक्विटी रेशियो पता है? मेरे को भी नहीं पता, ठीक। मेरे पास में कुछ शेयर्स पड़े हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के, बट मेरे को रिलायंस इंडस्ट्री का डेट इक्विटी रेशियो नहीं पता, ठीक ठीक। एंड क्या ज्यादातर इन्वेस्टर्स को पता होता है? इतने सारे लाखों करोड़ों लोगों ने इतने सारे लाखों करोड़ों लोगों ने अडानी की कंपनीज में शेयर लगाया था, सॉरी पैसा लगाया था, ठीक। क्या उन्हें पता था कि अडानी का डेट इक्विटी रेशियो क्या है? नहीं पता था, ठीक। ये कोई ऐसा थोड़ी ना हुआ है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई और अडानी ने बोरो कर लिया, नहीं, ये तो बरसों से थी, ठीक। अडानी इज ओवर लिवरेज्ड नॉट फ्रॉम टुडे, ये 15-20 साल से ओवर लिवरेज्ड ही है, 10-15 साल से, मतलब जब से इन्होंने बिजनेस शुरू किया है दे आर ओवर लिवरेज्ड, एक्सेसिव बोरोइंग्स है ही इनकी कंपनी में, ठीक है। बट किसको क्या पता, क्या फर्क पड़ता, कुछ हुआ, कुछ इसके पहले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के पहले क्या लोगों को ऐसा कुछ सोच रहे थे? आंसर इज नो, ठीक है। सो होता क्या है कि थोड़ा बहुत अगर डेट में, मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर में अगर कोई थोड़ा बहुत अगर डेट इक्विटी में चेंज हो गया, ठीक है। सो क्या होता है, इनिशियली इनिशियली क्या होगा कि कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो तो घटता बढ़ता रहता है ना, ठीक। एंड एंड ये हमारे को इन चीजों का इन्वेस्टर्स को एक्चुअल में कोई फर्क पड़ता ही नहीं।
हर दिन कुछ तो भी चलता रहता है, कोई नया प्रोजेक्ट करा, कुछ लोन ले लिया, कुछ रीपे कर दिया। अब अगर मैंने अडानी की कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो अब मैं क्या 24 घंटे बैठा हुआ हूँ उसकी बैलेंस शीट देखता रहूं, उसकी क्वार्टरली रिपोर्ट, उसका डेट इक्विटी रेशियो ही निकालता रहूं? मेरे पास कोई और काम नहीं है क्या, है ना? सो क्या होता है कि इन्वेस्टर्स को एक्चुअल में थोड़ा बहुत जब चेंज होता है डेट इक्विटी रेशियो में, उससे एक्चुअल में इन्वेस्टर को कोई फर्क पड़ता? अब पड़ भी नहीं रहा था। ठीक है। सो क्या होगा कि जब शुरुआत में कॉस्ट ऑफ डेट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, शुरुआत में अगर कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो बढ़ता भी है तो इन्वेस्टर्स को उससे कोई ऐसा खास फर्क पड़ता नहीं। सो इनिशियली केडी एंड केई विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक। बट जब डेट इक्विटी रेशियो एक सर्टन लिमिट्स, नॉर्मली क्या बोला जाता है कि डेट इक्विटी रेशियो अगर अप टू 2:1 है तो ठीक है। अब अगर एक कंपनी है उसका डेट इक्विटी रेशियो 1:1 है, उससे 1.25:1 हो गया तो क्या बुरा हो गया? नहीं, ऐसा भी कुछ खास नहीं हुआ। 1.5:1 हो गया तो क्या बहुत बुरा हो गया? नहीं हो गया। 1.6, 1.7, 1.8:1 हुआ? नहीं हुआ ना कुछ। 2:1 तक तो हम नॉर्मल मानते हैं ना कि ठीक है, कोई बात नहीं। अब कंपनी को तो पैसे की जरूरत पड़ती रहती है, बोरो कर लिया। अब हर समय थोड़ी ना इक्विटी इशू करा जाता है। सो व्हाट इज हियर कि यहाँ पे अब क्या होता है कि इनिशियली व्हेन द कंपनी इंक्रीजेस द डेट इन कैपिटल स्ट्रक्चर, शुरुआत में जो शेयर होल्डर उसको कोई फर्क नहीं। ठीक। सो केडी एंड केई रिमेन्स कांस्टेंट। बट जब डेट इक्विटी रेशियो एक सर्टन लिमिट से ऊपर पहुंचता है तो फिर इन्वेस्टर्स को लगने लगता है कि नहीं, अब कंपनी ना थोड़ा सा रिस्क बढ़ रहा है। सो ही स्टार्ट्स डिमांडिंग हायर रिटर्न्स। ठीक है। और फिर जो रिटर्न्स का जो डिमांड होता, हायर रिटर्न्स का जो डिमांड होता, तो ऐसा वो प्रोपोर्शनेटली ऐसा इंक्रीज नहीं होता। फिर क्या होता है, एकदम से सडनली लोगों को डर लगने लग जाता है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है और लोग कहते हैं अरे बाप रे, इतना लोन। ठीक। सो क्या हो गया, शेयर होल्डर डरे। हुआ क्या, जब अडानी के केस में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है तो सडनली जो शेयर होल्डर इन्फॉर्म्ड भी, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड जो पैसा लगा के बैठे थे, ठीक है, सिर्फ एलआईसी ने ही पैसा लगाया था ऐसा भी नहीं, तो एलआईसी ने बहुत थोड़ा सा पैसा लगाया था, अराउंड 30,000 करोड़ लगाया था, उसमें भी वो प्रॉफिट में ही है, जब पैसा लगाया था तो बहुत पहले लगाया था। सो व्हाट इज हियर कि जो उन्होंने पैसा लगाया, तो ऐसा थोड़ी ना कि बड़े जो 30-40,000 करोड़ रुपीस लगाता है को कंपनी की बैलेंस शीट नहीं देखेगा? देखेगा ना, देखेगा, डेट इक्विटी रेशियो भी कंप्यूट करेगा। ठीक है। छोटा इन्वेस्टर जाने दो, छोटा इन्वेस्टर क्या होता है, वो बैलेंस शीट देखता नहीं, देख के समझते भी किधर है। एक इंजीनियर है, एक डॉक्टर है, उनको तुम अगर बैलेंस शीट पकड़ा भी दोगे तो क्या करेगा उसका? डॉक्टर है, वो स्टेथोस्कोप लगा के थोड़ी ना कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ चेक कर लेगा बैलेंस शीट में से, उसको समझती ही नहीं, ने कभी पढ़ाई नहीं करी उस चीज की। एंड चलो हमारी तो, हमने तो पढ़ाई करी है, कर रहे हैं इस फील्ड में, हमारे को समझता है, बैलेंस शीट समझती है, डेट इक्विटी रेशियो समझता है। जाने तो बीकॉम वाले को पूछो जो सीए नहीं कर रहा, सीए सीएमए नहीं कर रहा है, बीकॉम वाले से पूछो, उसको बैलेंस शीट समझती है? नहीं, वो तो फॉर्मेट याद करता है, उसको भी ढंग से समझती थोड़ी ना है। तो क्या हो गया, कितने से लोगों को समझ रही है? हार्डली हिंदुस्तान में करोड़ों इन्वेस्टर है और सीए सीएमए मिला के कुछ लाख, 1% भी नहीं बैठते। सो क्या हो गया कि जब डेट इक्विटी रेशियो चेंज होता है तो ये न्यूज नहीं बनता, कोई टीवी चैनल पे बैठ के डिस्कशन नहीं कर रहा उस बारे में, तो क्या होता है, इन्वेस्टर भी सो रहा है। ठीक। एंड देन क्या होगा कि सडनली एक दिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है। अब वो इन्वेस्टर बेचारा सो रहा था, सुबह उसने उठ के देखा, 9:15 बजे उसने टीवी खोला, सीएनबीसी एनडीटीवी प्रॉफिट खोल के देखा, देखा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई। अब वो एनडीटीवी प्रॉफिट देख रहा है जो अडानी का ही चैनल है,
उसी में बताया जा रहा है कि फाइनेंशियल हेल्थ कंपनी की बुरी हो गई। अब बेचारा वो डर रहा है। अब वो क्या करता है, उसको समझ में नहीं आता। ठीक, डर लगना शुरू हुआ, रिस्क बढ़ी। नाउ ही डिमांड्स हायर रिटर्न, बट कंपनी हायर रिटर्न अब कहां से देगी? कंपनी का जो रिटर्न है वो तो रिटर्न है ही ना। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, यहां पे सडनली कॉस्ट ऑफ इक्विटी स्टार्ट्स राइजिंग, जो शुरू में राइज कर ही नहीं रही थी। देन अब क्या होता है, फॉर सम टाइम द कॉस्ट ऑफ डेट रिमेन्स कांस्टेंट इवन दो द कॉस्ट ऑफ इक्विटी स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। ठीक, बट एक लिमिट के बाद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी, जब डेट इक्विटी रेशियो बहुत ही हाई हो जाता है, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी लगने लगता है कि कंपनी रिस्की है एंड उसकी रेटिंग खराब हो गई। तो अब उसके बाद में बैंक्स भी क्या करते हैं, दे ऑल्सो स्टार्ट डिमांडिंग हायर रिटर्न। सो इनिशियली ये केई है, ये केडी है। ठीक है, इनिशियली व्हाट वाज देयर कि KD and KE remains constant even though there is an increase in debt in capital structure. Thereafter KE increases but KD remains constant. KE increases but KD remains constant. Then after this, the KD and KE both starts increasing. So what happens here in this case? यहाँ पे अब क्या होगा? Initially, जब cost of debt and cost of equity दोनों constant है, तो क्या होगा, जैसे जैसे हम डेट बढ़ाएंगे कैपिटल स्ट्रक्चर में, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल स्टार्ट कमिंग डाउन बिकॉज डेट इज चीपर एंड केडी एंड केई आर कांस्टेंट। thereafter when KD remains constant, then but the KE starts rising, so this KO will be stabilized like in net operating income approach. And when KD and KE both are rising, then overall cost of capital will also starts rising. ठीक है, therefore there will be a point where overall cost of capital will be minimum and value of firm will be maximum. ठीक है, सो क्या हो गया कि नेट इनकम अप्रोच और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर अचीव कर पाना पॉसिबल नहीं था, but in case of the traditional approach it is possible to achieve the optimal capital structure. ठीक है, so we write it right as per this theory as we increase the debt in capital structure, initially risk perception of shareholders about the company will not be changing, and cost of debt in bracket KD and cost of equity
cost of equity in bracket KE will will remain constant irrespective of change in capital structure. ठीक है. So initially when we increase the debt in capital structure, so debt बढ़ा, risk भी बढ़ी, but shareholders का risk perception नहीं बदला. ठीक है, बिकॉज जब शुरुआत में डेट बढ़ेगा कैपिटल स्ट्रक्चर में तो शेयर होल्डर्स का के लिए वो न्यूज नहीं बनता. ठीक है, डेट इक्विटी रेशियो बदलता रहता कंपनीज का, बट हर डेट इक्विटी रेशियो पे कोई बिजनेस न्यूज चैनल पे न्यूज आने लगती है? नहीं आती. तो क्या होता है, जो स्मॉल शेयर होल्डर है उनको फर्क पड़ता ही नहीं, एक्चुअल में उन्हें पता ही नहीं चलता. ठीक है, but when debt equity ratio when debt equity ratio goes beyond a certain point, goes beyond a certain point, then risk perception of shareholders change. Risk perception of shareholders change and they demand higher returns, due to which cost of equity goes up exponentially. ठीक है, सो क्या हो गया, एक सर्टन पॉइंट तक तो कोई फर्क नहीं पड़ा शेयर होल्डर्स को, बट एक लिमिट के बियॉन्ड गया तो फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल स्टार्ट राइजिंग, और वो प्रोपोर्शनेटली नहीं, एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा. डिसप्रोपोर्शनेट चेंज होगा इन द रिस्क, मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी. ठीक है, देन अब इसके बाद में क्या होता है कि अगर डेट एक सर्टन पॉइंट से और ऊपर चला जाता है, ठीक है, सो वहां पे क्या होगा, जो प्रोवाइडर्स ऑफ डेट हैं दे ऑल्सो स्टार्ट डिमांडिंग हायर रिटर्न्स, ड्यू टू विच द कॉस्ट ऑफ डेट ऑल्सो राइजेस. ठीक है, सो राइट, when debt equity ratio goes up further, then cost of debt also start rising exponentially.
also start rising exponentially. ठीक है. So अब क्या हुआ कि शुरुआत में के डी एंड के ई आर कॉन्स्टेंट, फिर उसके बाद में के ई बढ़ना शुरू हो गया एंड सर्टन बियॉन्ड अ सर्टन पॉइंट द के ई ऑल्सो सॉरी के डी ऑल्सो स्टार्ट राइजिंग. सो इसकी वजह से क्या होगा, इनिशियली व्हेन द के डी एंड के ई आर कांस्टेंट, सो इट इज सिमिलर टू नेट इनकम अप्रोच. और नेट इनकम अप्रोच में व्हाट वी हैव लर्नड दैट एज वी इंक्रीज द डेट इन कैपिटल स्ट्रक्चर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल स्टार्ट कमिंग डाउन. ठीक, देन उसके बाद में केडी इज कांस्टेंट बट K is rising. So this is similar to net operating income approach. So here the overall cost of capital will be constant. ठीक है, exactly वो proportionately वैसा change नहीं हो रहा है, so थोड़ा सा नीचे जाके फिर वो constant होगा. And when the KD and KE both are rising, then overall cost of capital will also be rising. ठीक है, so right next. Initially when KD and KE are constant, then overall cost of capital in bracket write Q will be coming down as we increase the debt in capital structure. ठीक है, अब इसके बाद में क्या होगा, जब के डी और के दोनों कांस्टेंट हैं, सॉरी दोनों राइज कर रहे हैं, देन इट विल ऑल्सो बी स्टार्ट राइजिंग. इज इट क्लियर? ठीक है, देन राइट देयर आफ्टर it will be rising when KD and KE both are rising. अच्छा, इसमें हमने बीच में वो नहीं लिखा, वो स्टेबलाइज होगा. हाँ हाँ हाँ, एक मिनट, वो एक मिनट. thereafter it will be stabilizing when KD is constant and KE is rising. It will also, यहाँ पे also add कर लेना. It will also be rising when KD and KE both are rising.
नाउ तो यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे देयर विल बी अ पॉइंट वेयर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज मिनिमम, एंड जहाँ पे कि वो मिनिमम होगा वहां पे वैल्यू ऑफ फर्म मैक्सिमम होगा। ठीक है, सो हियर राइट देयरफॉर there will be there will be a point there will be a point where overall cost of capital overall cost of capital in bracket write q will be constant, sorry, uh, will be will be minimum will be minimum, and at that point value of firm in bracket v will be maximum। ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट या क्वेश्चन? ठीक है, सो यहाँ पे हमारी जो बेसिक तीनों थियरीज हैं वो हमने थियरीज कंप्लीट कर ली। ठीक, नाउ अब इसके बाद में वी स्टार्ट विद द प्रॉब्लम्स। ठीक है, सो अब इसके प्रॉब्लम्स स्टार्ट करते हैं। कम टू प्रॉब्लम नंबर 10। प्रॉब्लम नंबर 10 पे आओ। क्या दिया हुआ है? अ फॉर्म्स एनओआई ऑफ रुपीज 1 लाख, इट्स केओ इज 10%, debt is rupees 5 lakh, and KD is 6%. Find cost equity value of firm under net operating income approach. Find V, that is value of firm, and KE. If debt is rupees 7 lakh, will your answer differ under net operating income approach? And एक मिनट प्रॉब्लम नंबर 10 नहीं 9 पे आओ, पहले 9th करते हैं। ठीक, so a firm's NOI is rupees 1 lakh, its cost of equity is 10%, and the cost of debt is 6%, and the market value of the debt is rupees 5 lakhs. Find the overall cost of capital and value of firm under net income approach. What would be the position of the value of debt is rupees 7 lakhs. Find KO, that is overall cost of capital, S। कुछ जगह पे कुछ बुक्स में जो वैल्यू ऑफ एस है वो वैल्यू ऑफ शेयर मतलब इक्विटी के लिए भी यूज होती है तब। ठीक है, सो एस हियर इज इक्विटी, डी दैट इज डेट, एंड वी इज वैल्यू ऑफ फर्म फॉर द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट। ठीक है, सो फर्स्ट वी कम टू द प्रॉब्लम नंबर 9। प्रॉब्लम नंबर 9 में
क्या करना होगा हमारे को यहाँ पे इस केस में, व्हाट वी हैव टू डू हियर इज कि पहली सिचुएशन में हमारे को वैल्यू ऑफ फर्म कंप्यूट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने ऑपरेटिंग इनकम ईबीआईटी दिया हुआ है, दैट इज गिवन हाउ मच, इट इज 1 लाख, एंड इंटरेस्ट रेट इज हाउ मच, इट इज 6%, and what is the amount of the loan, it is 5 lakhs. So 5 lakhs का 6% करा, so that comes to 30,000. so इससे हमारी नेट इनकम आ जाएगी कितनी, 70,000, and the KE is given 10%. KE कितना दिया हुआ है, 10%. so इससे हम वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल सकते हैं। एक बार वापस से फॉर्मूलेज रिवाइज कर लेते हैं बिफोर वी स्टार्ट विद द प्रॉब्लम्स। सो हमारे पास में वैल्यू ऑफ फर्म के दो फॉर्मूले हैं। वन वैल्यू ऑफ फर्म इज V इज इक्वल टू E प्लस डी। E स्टैंड्स फॉर द वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड D स्टैंड्स फॉर द वैल्यू ऑफ डेट। देन द अदर फॉर्मूला फॉर द वैल्यू ऑफ फर्म इज EBIT डिवाइड बाय KO। Then the KO is average or overall cost of capital, which is equal to KD into D upon D plus E plus KE into E upon D plus E. Then we are having net income is EBIT minus interest, because we don't have preference share and we don't have tax also. So EBIT minus interest will be net income, and then the value of equity is net income divided by KE, and the value of debt is interest divided by KD. Got it? So here यहाँ पे हम आ जाते हैं इसका ए पार्ट पे। ए पार्ट, राइट, नेट ऑपरेटिंग इनकम, नेट ऑपरेटिंग इनकम इन ब्रैकेट EBIT, दिस इज रुपीज 1 लाख, लेस इंटरेस्ट, less interest in bracket, right, it is 5 lakhs into 6%, so that comes to rupees 30,000. इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, we are going to get is net income, so right, therefore net income it is 70,000, and they have given in the question that the cost of equity is how much, cost of equity is given 10%, ठीक है। so here write cost of equity in bracket, write KE, it is 10%, it is 10%. so from here what we are going to get here is value of equity, value of equity, it is net income divided by KE, and net income is how much, it is 70,000, and the K is given in the problem is 10%, so 70,000 divided by 10% कितना आएगा, 7 lakhs, this is 7 lakhs। then इसमें हम ऐड करेंगे वैल्यू ऑफ डेट, add value of debt, it is 5 lakhs। so from this we are going to get is the value of firm, so write therefore value of firm कितना आ गया, 7 + 5 12 हो गया, सो 12 lakhs। और क्या पूछा उन्होंने, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। अब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालेंगे, लोग हमारे को वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला पता है, ठीक है। हमारे को क्या पता है, वैल्यू ऑफ फर्म V इज इक्वल टू EBIT डिवाइडेड बाय KO, ठीक है। सो इससे हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, KO को इधर ले जाओ और V को इधर ले आओ, ठीक है। सो V को अगर मैं इधर ले आऊं तो क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा,
KO will be equal to EBIT divided by V, and if you multiply this with 100 you will be getting the answer in परसेंटेज. ठीक. सो यहां पे हमारे को क्या पता है इस क्वेश्चन में? EBIT पता है एंड वैल्यू ऑफ फर्म पता है. एंड अगर EBIT एंड वैल्यू ऑफ फर्म अगर हमारे को पता है, वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ KO. सो राइट. Overall cost of capital, overall cost of capital in bracket KO is equal to EBIT divided by V into 100, and this is 1 lakh divided by 12 lakhs into 100. बताओ कितना आएगा? हाँ, so 8.33%. 8.33%. Is this clear? ठीक है. Then अब इसके बाद में ये हमारा क्वेश्चन है किसका? नेट इनकम अप्रोच का है. ठीक है. सो क्या था क्वेश्चन? एज पर NOI, sorry, firm's NOI is rupees 1 lakh. Net operating income is rupees 1 lakh. Net operating income मतलब EBIT 1 lakh है. Its cost of equity is 10%. Cost of debt is 6%. The market value of debt is rupees 5 lakhs. Find the overall cost of capital and value of firm under net income approach. So एक कौन सी थियरी वाला क्वेश्चन है? ये net income approach वाला प्रॉब्लम. ठीक. And what we have learned in case of the net income approach, हमारा जो assumption है वो क्या है? That the cost of debt and cost of equity remain constant irrespective of change in capital structure. ठीक है. So KD and KE remains constant. And if the KD and KE remains constant, then what happens? Overall cost of capital comes down and the value of firm increases. Is it clear? Got this? या फिर वाइस वर्सा भी हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीजेस एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम्स डाउन. सो व्हाट वी डू, यहाँ पे फॉर दिस पार्ट हम एक काम करते हैं, वो नोट लिख के ले लेते हैं एंड देन वी सॉल्व इट. सो राइट फॉर बी पार्ट, फर्स्ट राइट द नोट. राइट. एज पर हमने लिखी हुई है, बट फिर भी प्रॉब्लम के साथ भी लिख के ले लेते हैं. जब तुम रिवीजन करोगे तो वहां पे दिक्कत नहीं होगी. एज पर नेट इनकम अप्रोच, एग्जाम में ये सब नोट्स वोट्स की जरूरत नहीं होती है. ठीक है. वहां पे जस्ट राइट द आंसर. टाइम इज इंपॉर्टेंट. कॉस्ट ऑफ डेट एंड cost of equity remain constant irrespective of change in capital structure. Therefore KD will remain at 6% and KE will be
10% even though value of debt value of debt increases to rupees 7 lakh increases to rupees 7 lakhs. ठीक. So B part में वो हमारे से क्या पूछ रहे थे? What would be the position if the value of debt is rupees 7 lakhs? पहले हमारा debt कितना था? 5 lakhs. So 5 lakhs से debt बढ़ के कितना हो गया? 7 lakhs हो गया. And net income approach में हमारा assumption है that KD and KE will not change. So KD will remain 6%, KE will remain 10%. It is not going to change. Then what we are going to have here, यहाँ पे अब क्या हो जाएगा? वापस से हम करेंगे. हमारा एक और चीज थी, हमने पहले भी नोट लिखा था, ये जो हमारा EBIT है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर. कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज करने से हमारा EBIT चेंज नहीं होता है. तो अगर EBIT पहले 1 लाख रुपीज था तो वो अब भी 1 लाख रुपीज ही रहेगा. सो राइट EBIT in bracket net operating income this is rupees 1 lakh. देन इसमें से लेस कर देंगे इंटरेस्ट कितना होगा? 7 लाख का 6%, 7 लाख का 6% तो 42,000 आ जाएगा. इसमें से लेस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? देयरफॉर नेट इनकम 1 लाख में से 42,000 माइनस किया, सो दिस विल बी 58,000. ये हमारे पास हो जाएगा 58,000. सो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं? वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालते हैं. ठीक है. सो वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकालोगे? नेट इनकम हमारे पास आ चुका है. नेट इनकम डिवाइड बाय के विल रिमेन कांस्टेंट एट 10%. ठीक है. सो राइट कॉस्ट ऑफ इक्विटी it is 10%. So from here we get is value of equity क्या है फॉर्मूला? नेट इनकम डिवाइडेड बाय के. सो नेट इनकम डिवाइडेड बाय के, this is 58,000 divided by 10%. So 58,000 divided by 10%, that will be rupees 5,80,000. अब इसमें हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे वैल्यू ऑफ डेट. सो राइट ऐड, तो हमारे पास आ जाएगा वैल्यू ऑफ फर्म. ऐड वैल्यू ऑफ डेट, this is 7 lakhs, this is 7 lakhs. So from this we get is value of firm, this is 7 lakh plus 5 lakh 80,000, so this will be 12 lakh 80,000. 12 lakh 80,000. ठीक. अब इसके बाद में हमारे को क्या कंप्यूट करना है? वापस से ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंप्यूट करना है. सो राइट ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल in bracket KO is equal to EBIT divided by V into 100, and EBIT is 1 lakh divided by
वैल्यू ऑफ फर्म इज 12,80,000 इन 200। कंप्यूट करो और बताओ कितना है। 7.8125%। 7.8125%। सो क्या हो गया, जैसे हमने डेट बढ़ाया कैपिटल स्ट्रक्चर में, हमारा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो गया और वैल्यू ऑफ फर्म जो 12 लाख था उससे 12,80,000 हो गया। इज इट क्लियर देन? अब इसके बाद में फॉर द सी पार्ट, सी पार्ट के लिए उन्होंने क्या पूछा है, फाइंड केओ। केओ इज ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एस दैट इज द वैल्यू ऑफ इक्विटी, ठीक है, डी वैल्यू ऑफ डेट, एंड वी दैट इज वैल्यू ऑफ फर्म फॉर द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट 10, 20, 30, 50, 90 एंड 1 लाख, वेयर के इज 10% एंड के डी इज 5। क्योंकि ये वाला पार्ट उन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। फर्स्ट और सेकेंड पार्ट के लिए डेट जो था वो 6% था, ये अलग ही पार्ट बना दिया है उन्होंने। सो के इज 10% बट द के डी इस पार्ट के लिए उन्होंने 5% लिया है। गॉट इट? सो राइट, लोग कैसा होता है, इंस्टीट्यूट क्या करता है एग्जाम में, ऐसे ही छोटी छोटी चीजें जो हैं वो डिफरेंट कर देता है। अब क्या होता है, जिसको कंफ्यूज होना है वो कंफ्यूज हो जाता है कि डी जो है, सॉरी के डी जो है 6% से 5% कैसे हो गया। ये हो गया, उन्होंने लिख के दिया है ना 5% है तो है, खत्म हुआ। उससे रिमेंबर वन थिंग, द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन इन द वर्ल्ड इज द एग्जामिनर, ठीक। नेवर जज हिज इंटेलिजेंस, ठीक। जो इंस्टीट्यूट कर रहा है ना वो सही कर रहा है, ठीक। हमारे को पता है कि इंस्टीट्यूट गलतियां करता है, बट फिर भी एग्जाम में एग्जामिनेशन हॉल इज नॉट द पॉइंट टू जज इंस्टीट्यूट, ठीक है। जो है जैसा उन्होंने लिखा है वैसा करके दे दो, दैट्स ऑल, ठीक है। नाउ फॉर द सी पार्ट, राइट, स्टेटमेंट फॉर computation of Q, S, D and V at different levels of interest, at different levels of interest, ठीक है। इसमें अब हम जो कॉलम्स बनाएंगे वो कैसे लेंगे, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, देन इंटरेस्ट कॉस्ट एंड दिस इंटरेस्ट कॉस्ट, यहां पे उन्होंने कितनी दी हुई है, 6 इंटरेस्ट कॉस्ट दी हुई है। सो क्या क्या है, 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, 90,000 and 1 lakh, and 1 lakh, 1 lakh, ठीक। नो, अब यहां पे हम क्या करेंगे, पहले वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालेंगे। वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकालेंगे, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, विल बी गेटिंग नेट इनकम,
Net income divided by cost of equity, that will be the value of equity. So here we are going to have here a value of equity, value of equity. So how we do this? It is EBIT and one thing we have learned that EBIT doesn't change with the change in the capital structure. So if the EBIT is 1 lakh, it means it is 1 lakh irrespective of change in capital structure. So it is 1 lakh. इसमें से लेस कर देंगे इंटरेस्ट. वैसे तो ऊपर लिखा ही हुआ है बट फिर भी जब हम स्टेटमेंट बना रहे हैं तो वापस से लिख के ले लेते हैं. दिस इज 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, 90,000 and 1 lakh. So from here what we get is the net income. So write therefore net income. नेट इनकम. नेट इनकम कितना हो जाएगा? 1 लाख में से 10,000 माइनस किया, सो दिस विल बी 90,000. दिस इज 80,000, 70,000, 50,000, 10,000 एंड 0. देन अब इसके बाद में कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ equity in bracket K is equal to 10% and this will be 10% irrespective of change in capital structure. अगर हम capital structure बदल भी रहे हैं तब भी KD and KE will not be changing. So from here we will be getting is value of equity, value of equity. This is net income divided by KE. So 90,000 divided by 10% is going to be 9 lakhs. 80,000 divided by 10% is 8 lakhs. This is 7 lakhs. This is 5 lakhs. This is 1 lakh and this is 0. Then अब हम निकालेंगे इसके बाद में वैल्यू ऑफ डेट. वैल्यू ऑफ डेट हम कैसे कंप्यूट करते हैं? इट इज इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय केडी. सो बी वैल्यू ऑफ डेट, value of debt. So here we will be having interest, interest is 10, 20, 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, 90,000 and 1 lakh and 1 lakh. Then whether the cost of debt will change with the change in the capital structure, again the answer is no. If the KD is 5% for all the interest level, the KD will remain constant at 5%. So write cost of debt,
cost of debt in bracket KD. For the last part it is given 5%, so 5% for all the levels. Now अब हम इससे क्या करेंगे, अब हम कंप्यूट करेंगे वैल्यू ऑफ डेट, एंड वैल्यू ऑफ डेट इज इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय KD. So write value of debt, it is interest divided by KD. So what we are going to have, 10,000 divided by 5%, this is 2 lakhs. 20,000 divided by 5% ये हो जाएगा 4 lakhs. 30,000 divided by 5% will be 6 lakhs. This is 10 lakhs. This is 18 lakhs. And this is 20 lakhs. This is 20 lakhs. Then अब क्या हम इससे वैल्यू ऑफ फर्म कंप्यूट कर सकते हैं? इससे वैल्यू ऑफ फर्म कंप्यूट किया जा सकता है. वैल्यू ऑफ फर्म विल बी वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट. So here we will be having C, value of firm. Value of firm, this is A plus B. A plus B. 9 lakhs plus 2 lakhs, this will be 11 lakhs. 8 lakhs plus 4 lakhs, it will be 12 lakhs. Then 7 lakhs plus 6 lakhs, this will be 13 lakhs. This is 15 lakhs. 18 plus 1, 19 lakhs. And here 20 plus 0, this is 20 lakhs. This is 20 lakhs. Then अब इसके बाद में हमारे को कंप्यूट करना है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम कैसे कंप्यूट करेंगे? इट इज EBIT डिवाइडेड बाय V into 100. So D, overall cost of capital, it is KO is equal to EBIT divided by V into 100. EBIT divided by V into 100. EBIT कितना? EBIT है 1 lakh divided by 11 lakh into 100. 1 lakh divided by 11 lakh divide by 11 lakh into 100. %9.09%. देन इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा? इट इज 1 lakh divided by 12 lakhs into 100. ये कितना आएगा? 8.33%. Same way compute for remaining. 7.69%.
6.67%. 5.26%. एंड ये लास्ट वाला तो 5%. दिस इज 5%. ठीक. सो व्हाट वी हैव गॉट हियर, जैसे जैसे हमारा डेट बढ़ा कैपिटल स्ट्रक्चर में, as we are increasing the debt in capital structure, so क्या हो रहा है, overall cost of capital is coming down, and as overall cost of capital is coming down, the value of firm is going up, and where we are having the maximum value of firm, where the debt is maximum, जहां पे 100% debt and 0% equity है, वहां पे हमारा value of firm maximum आया. This is what we are having, this is we call as the net income अप्रोच. इसको हम क्या बोलेंगे, नेट इनकम अप्रोच है. उसके अकॉर्डिंग वी आर गेटिंग दीज रिजल्ट्स हियर. ठीक है, कोई डाउट या क्वेश्चन यहाँ पे? ठीक है. सो जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उसमें स्पीड तो ज्यादा नहीं है. ठीक है, थोड़े टाइम में लिखने की भी स्पीड और बढ़ जाएगी, तो एग्जाम में भी पेपर भी कंप्लीट होंगे जल्दी. स्पीड थोड़ा सा तो रखनी ही पड़ेगी हमारे को. ठीक है, चलो एक काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, देन वी प्रोसीड फर्दर. स्टार्ट करें. नाउ वी कम टू प्रॉब्लम नंबर 10. सिमिलर प्रॉब्लम है बट विद द नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच. ये अभी जो हमने प्रॉब्लम किया था दैट वाज फॉर द नेट इनकम अप्रोच. बिल्कुल सिमिलर प्रॉब्लम नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच के साथ में. डेटा भी बिल्कुल सिमिलर सा ही है. नाउ what is here, a firm earns NOI of rupees 1 lakh. NOI मतलब net operating income means EBIT. Its KO is 10%, that is rupees 5 lakhs and the KD is 6%. So यहाँ पे KE नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, KO दिया हुआ है. Average और overall cost of capital is given 10%, that is 5 lakhs and the KD is 6%. Find the cost of equity, value of firm under net operating income approach. NOI approach में, net operating income approach में हमारे को वैल्यू ऑफ फर्म फाइंड आउट करना है एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है. अब हम वैल्यू ऑफ फर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे? वैल्यू ऑफ फर्म इज ईबीआईटी डिवाइड बाय केओ. ईबीआईटी इज हाउ मच, इट इज रुपीज 1 लाख एंड द केओ इज 10%. सो 1 लाख डिवाइड बाय 10%, दैट इज गोइंग टू रुपीज 10 लाख. चलो स्टार्ट करते हैं. सो राइट हियर फॉर द ए पार्ट के लिए हम इसको, अच्छा फिर चलो इस पूरा क्वेश्चन ही अभी हमने पढ़ा नहीं. बी वी एंड के, इफ द डेट इज रुपीज 7 lakhs, विल योर आंसर डिफर, वर्क अंडर एनओआई थ्योरी. ठीक है, सो व्हाट वी आर डूइंग, यहाँ पे डेट को बढ़ा के कितना कर दिया, 5 लाख से 7 lakhs कर दिया. तो क्या होगा, यहाँ पे जब हम नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच की बात कर रहे हैं तो उन्होंने क्या बोला था कि as we increase the debt in capital structure, financial risk of the company will be increasing. If the risk of the company is increasing, then the risk of the shareholder is increasing, means the KE will increase. So जो KE पिछले पार्ट में आया होगा A पार्ट में, वो B पार्ट में वो KE नहीं रहेगा, it will change. Debt बढ़ेगा तो KE will increase and the value of firm will remain constant at 10 lakhs. KO will be 10% and the value of firm will be 10 lakhs. Find K, D, S and V for the following levels of the interest cost under NOI approach. 10, 20, 25, 35, 45, where KO is 10% and the KD is 5%. ठीक है, यहाँ पे इस C पार्ट के लिए KD 5% है. फर्स्ट पार्ट और सेकंड A और B के लिए KD कितना है, 6% है. ठीक. So what we have to do here in this case, what we'll be doing, यहाँ पे अब हम A पार्ट पे आते हैं. So write A, it is EBIT
It is net operating income. Net operating income. It is rupees 1 lakh. Then overall cost of capital. Overall cost of capital in bracket write KO is 10%. KO is 10%. So इससे हम क्या निकाल सकते हैं? EBIT divided by KO will be getting the value of firm. So write value of firm this is EBIT divided by KO, and this is 1 lakh divided by 10%. So that will be coming rupees 10 lakhs. Then अब वैल्यू ऑफ फर्म का जो हमारे पास में फॉर्मूले हैं, दो फॉर्मूले हैं. वन इज EBIT डिवाइड बाय KO एंड अनदर फॉर्मूला इज वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट. ठीक है. सो अगर हम वैल्यू ऑफ फर्म में से अगर हम वैल्यू ऑफ डेट माइनस कर देंगे तो वी विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ इक्विटी. सो राइट लेस वैल्यू ऑफ डेट लेस value of debt. This is rupees 5 lakhs. So from here we will be getting is value of equity. Value of equity. This is E. It is rupees 5 lakhs. ठीक. Then अब इसमें हमारे को क्या निकालना है? अब हमारे को निकालना है, ये हमारे पास क्या गया? वैल्यू ऑफ फर्म. हमारे को दो चीजें निकालनी थी. वैल्यू ऑफ फर्म हमने निकाल लिया. दिस इज रुपीज 10 lakhs. एंड अब हमारे को निकालना है के. ठीक. यहाँ पे हमारे को एक फॉर्मूला पता है, वैल्यू ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला पता है. वैल्यू ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला क्या है? नेट इनकम डिवाइडेड बाय के. तो इससे अगर मेरे को के की वैल्यू चाहिए होगी, सो नेट इनकम डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी, एंड इफ यू मल्टीप्लाई दिस विद 100 यू विल बी गेटिंग द आंसर इन परसेंटेज. गॉट इट. सो अब हमारे को अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है तो यहाँ पे हमारे को क्या चाहिए होगा? नेट इनकम चाहिए होगा. एंड हाउ वी कैन फाइंड आउट द नेट इनकम? इट इज EBIT माइनस इंटरेस्ट. EBIT इज गिवन रुपीज 1 लाख एंड इंटरेस्ट 5 lakhs का 6% हो जाएगा. सो राइट नेट इनकम. नेट इनकम in bracket write it is EBIT minus interest, and this is 1 lakh minus 5 lakhs का 6%. 5 lakhs का 6% is going to be 30,000. So 1 lakh minus 30,000, that is going to be rupees 70,000. ये हो गया हमारे पास में रुपीज 70,000. ठीक है. देन अब हम क्या निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ इक्विटी. सो राइट कॉस्ट ऑफ इक्विटी. दिस इज के इज इक्वल टू नेट इनकम divided by value of equity into 100. ठीक. So net income we have computed is 70,000 divided by value of equity जो हमने निकाला है, this is rupees 5 lakhs into 100. 70,000 divided by 5 lakhs into 100, that comes how much? This comes to 14%. So the cost of equity here is 14%. Then
अब इसके बाद में फॉर द नेक्स्ट पार्ट, find the V and KE if the value, if the debt is 7 lakhs. Will your answer differ? Work under NOI theory. So what we have to do here in this situation, यहाँ पे अब जो हमारा डेट है वो 5 लाख से बढ़ के कितना हो गया, 7 lakhs हो गया. एंड एज पर द नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, क्या कांस्टेंट रहता, केओ कांस्टेंट रहता, क्या बदलता, केई बदलता. तो जब हम डेट बढ़ाएंगे 5 लाख से 7 lakhs करेंगे तो केई बढ़ जाएगा, बट द केओ विल रिमेन कांस्टेंट. ठीक है. सो राइट फॉर द बी पार्ट, ये नोट लिख के ले लेते हैं. एग्जाम में रिमेंबर ये सब नोट्स लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जामिनर को पता है. एंड यू जस्ट राइट द आंसर. ये सब हम अपने रेफरेंस के लिए या तुम्हारे रेफरेंस के लिए सब नोट्स वोट्स लिख के जा रहे हैं. एग्जाम में इनकी कोई जरूरत होती नहीं है, कोई पढ़ता भी नहीं है. राइट. एज पर नेट ऑपरेटिंग income approach, KO remain constant, therefore KO will remain at 10% even though value of debt increases to rupees 7 lakhs. Value of debt increases to rupees 7 lakhs. ठीक. यहाँ क्या होगा, EBIT will be 1 lakh, it is not going to change. KO will be 10%, it is also not changing. So क्या होगा, वैल्यू ऑफ फर्म भी सेम ही रहेगा. डायरेक्ट भी लिख सकते हैं बट फिर भी लिख के ही ले लेते हैं. सो राइट, EBIT, it is rupees 1 lakh. Then overall overall cost of capital, overall cost of capital KO is 10%. So from here we get is value of firm, this will be EBIT divided by KO. So 1 lakh divided by 10%, this will be rupees 10 lakhs. Then अब हमारे को क्या चाहिए होगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला क्या है, नेट इनकम डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी. तो हमारे को वैल्यू ऑफ इक्विटी भी निकालना पड़ेगा, तो इसमें से लेस कर देते हैं वैल्यू ऑफ डेट. वैल्यू ऑफ डेट इज राइट नाउ is how much, it is rupees 7 lakhs. Value of debt is rupees 7 lakhs. So from this we will be getting is value of equity. So write value of equity. This is E. It will be rupees 3 lakhs. अब हमारे को क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी. उसके लिए हमारे को चाहिए होगा नेट इनकम. सो नेट इनकम, दिस इज EBIT माइनस इंटरेस्ट. नेट इनकम, it is EBIT minus interest. So EBIT is 1 lakh minus 7 lakhs का 6%. This will be 42,000. इंटरेस्ट हो जाएगा. So 1 lakh में से 42,000 माइनस करोगे, so you will be getting is 58,000. Then we are going to compute is the cost of equity. Cost of equity, this is net income divided by value of equity in 200. So this is 58
58,000 divided by 3 lakhs into 100. 58,000 divided by 3 lakhs into 100. That comes how much? It will be more than 14%. That is going to be there. 19.33%. So क्या हो गया कि जब हमने डेट बढ़ाया कैपिटल स्ट्रक्चर में तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ गया, बट वैल्यू ऑफ इक्विटी वैल्यू ऑफ फर्म या ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज कांस्टेंट. नाउ दे आर आस्किंग फॉर द नेक्स्ट पार्ट. अब इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट के लिए क्या पूछ रहे हैं? फाइंड के डी एस एंड वी फॉर द फॉलोइंग लेवल ऑफ interest cost under NOI approach. So we have to compute. Next is, so write for the C part statement for computation of K, S, D and V at different levels levels of interest cost. ठीक है. So what the columns we are going to get here is, columns हमारे पास आ जाएंगे serial number, particulars, then interest cost, there we will be having 10,000, 20,000, 25,000, 35,000 and 45,000 and 45,000. So what we are going to get here is, पहले हम क्या कंप्यूट करेंगे? वैल्यू ऑफ फर्म. एंड वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकालोगे? वैल्यू ऑफ फर्म इज EBIT डिवाइड बाय KO, एंड KO उन्होंने दिया हुआ है 10%, एंड अगर KO 10% है, देन एज पर द नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच KO रिमेन्स कांस्टेंट. So this KO is not going to change with the change in the capital structure. So it will be 10% only. So write EBIT is rupees 1 lakh. And EBIT is also independent of capital structure. उसके साथ में change नहीं होता है. Overall cost of capital in bracket KO, it is 10%. It is 10%. So from this we will be getting the value of firm. This is EBIT divided by KO. So this is 1 lakh divided by 10% will be 10 lakhs. And this will be 10 lakhs for all the interest cost. ये चेंज नहीं होगा. यही हमारी नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है. ठीक है. देन अब इसमें से हम क्या कर देंगे? वैल्यू ऑफ डेट माइनस करोगे तो हमारे पास वैल्यू ऑफ इक्विटी आएगा. अब इसके लिए वैल्यू ऑफ डेट निकालना पड़ेगा ना हमारे को. एंड हाउ वी आर गोइंग टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ डेट? उसके लिए हमारे पास में फॉर्मूला क्या है? वैल्यू ऑफ डेट इज इंटरेस्ट डिवाइड बाय KD.
इंटरेस्ट उन्होंने दिया हुआ है, केडी भी दिया हुआ है, रिमेंबर केडी इस पार्ट के लिए 5%. देन राइट बी, वैल्यू ऑफ डेट, value of debt, and here we will be having it is interest. Interest is how much? It is ऊपर भी लिखा हुआ था, डायरेक्टली भी एग्जाम में तुम डायरेक्ट भी करके चलेगा, डायरेक्टली वैल्यू ऑफ डेट लिख दोगे ना चलेगा, ठीक है. सो जो मैं क्लास में करा रहा हूं ना, ये थोड़ा सा लेंदी है आंसर, ताकि जब तुम रिवीजन करो मैं उस हिसाब से पढ़ा रहा हूं कि तुम याद नहीं करोगे, समझोगे, ठीक है. देन cost of debt, this is KD, it is 5%, and this is 5% for all the levels of interest cost. Then from this we are going to get is value of debt. Value of debt, it is interest divided by KD. Your interest is represented by I. So 10,000 divided by 5%, that will be 2 lakhs. 4 lakhs, 5 lakhs, 7 lakhs, 9 lakhs. Then from this we are going to compute is the value of equity. So write C, value of equity. This is A minus B. A minus B. So 10 lakhs minus 2 lakh, this will be 8 lakhs. 10 lakhs minus 4 lakhs, this is 6 lakhs. This is 5 lakhs. This is 3 lakhs. And this is 1 lakh. अब ये हमारे पास क्या आ गया, वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गया. अब हमारे को निकालना है क्या, कॉस्ट ऑफ इक्विटी. एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल बी नेट इनकम डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी. वैल्यू ऑफ इक्विटी हमारे पास में ऑलरेडी है. सो राइट डी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी. Cost of equity. And इसके लिए first we are going to compute is net income. Net income. In bracket write EBIT minus interest. EBIT minus interest. And EBIT is 1 lakh. इसमें से इंटरेस्ट माइनस करो 10, 20, 25, 35 and 45, so that will be 90,000. Then 80,000. Then 75,000. Then 65,000 and 55,000 and 55,000. अब इसके बाद में हम कंप्यूट करेंगे क्या, कॉस्ट ऑफ इक्विटी. कॉस्ट ऑफ इक्विटी, दिस इज KE is equal to net income divided by value of equity into 100. ठीक, so that is 90,000 divided by value of equity is 8 lakhs into 100, and this is 80,000 divided by 6 lakhs into 100,
ठीक है, दिस इज 75,000 divided by 5 lakhs into 100. हाँ, बताओ। 11.25, 13.33%, 15%, 21.67%, and 55%. So what's happening here in case of the net operating income approach, as we are increasing the debt in capital structure, हम जैसे जैसे डेट बढ़ा रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर में, डेट 2 से 4, 4 से 5, 5 से 7, फिर 9 lakhs, क्या हो रहा है? द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज राइजिंग। जैसे जैसे डेट बढ़ा है, रिस्क बढ़ी, रिस्क बढ़ने की वजह से कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ी, एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज राइजिंग इन सच अ प्रोपोर्शन दैट द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन constant and the value of firm will also be constant. This is what the net operating income approach is. Is this clear? Got this? ठीक है, चल अब इसके बाद में we come to एक हमारा नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच के प्रॉब्लम हो गए। अब हम आ जाते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच के प्रॉब्लम पर। ठीक है, सो राइट, अच्छा इसमें अभी एक मिनट, प्रॉब्लम नंबर 8 पे आ जाओ। एक मिनट, 7 पे आ जाओ, प्रॉब्लम नंबर 7। क्या दिया हुआ है? इन कंसिडरिंग द मोस्ट डिजायरेबल कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर अ कंपनी, द फॉलोइंग एस्टिमेट ऑफ द कॉस्ट ऑफ डेट एंड इक्विटी कैपिटल आफ्टर टैक्स हैव बीन made at various levels of debt equity mix. Debt as percentage of capital employed, cost of debt and cost of equity is given. You are required to determine optimum debt equity mix for the company for calculating composite. Composite मतलब एवरेज या ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही है। ठीक है, तो क्या हो जाता है डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में, कभी एग्जाम्स में वो क्या है, डिफरेंट वर्ड्स यूज कर दिए जाते हैं फॉर द सेम थिंग। ठीक है, सो क्या एक रीजनेबल ये जजमेंट है कि पूछ ही क्या रहे होंगे, अगर केडी के ही दिया हुआ है तो केओ ही पूछेंगे ना, उसके अलावा और पूछेंगे भी क्या? ठीक है, सो यहाँ पे जब हम बात करते हैं जो इसमें कंप्यूट करते हैं, यहाँ पे अगर तुम डेटा देखो 0% डेट है तो कॉस्ट ऑफ डेट 5%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 12%, फिर उसके बाद में 10% पे 5 12, फिर 5 12.5, तो क्या हो गया, शुरुआत में केडी के ही कांस्टेंट है, फिर उसके बाद में केडी फिर भी कांस्टेंट है बट केई राइज होना शुरू हो गया, फिर उसके बाद में केडी और केई दोनों राइज होना शुरू हो गया, तो कौन सी अप्रोच होगी? ये होगी ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है, सो ये हमारे पास में ट्रेडिशनल अप्रोच का प्रॉब्लम आ गया। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमारे को? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारे को कंप्यूट करना है। ठीक है, सो राइट स्टेटमेंट फॉर computation of composite या फिर ओवरऑल। अब यहाँ पे मैं ओवरऑल सिर्फ इसलिए लिख रहा हूं कि हम वर्ड पढ़ते आ रहे हैं ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, एग्जाम में उन्होंने कंपोजिट मतलब कंपोजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक, अब इसमें हम जो कॉलम्स लेंगे, कॉलम्स क्या लेंगे? सीरियल नंबर, देन डेट एज परसेंटेज ऑफ कैपिटल, equity as percentage of capital, then cost of debt, then cost of equity, then composite or overall cost of capital.
बाकी कॉलम छोटे छोटे बनाएंगे, लास्ट कॉलम में हमारे को क्योंकि कैलकुलेशन करनी है तो हम वहां पे उसमें स्पेस ज्यादा रखेंगे लास्ट कॉलम के लिए, उस हिसाब से ही बनाना। ठीक है, तो यहाँ पे कॉलम्स हमारे पास होंगे सीरियल नंबर, देन डेट as percentage of capital, then equity as percentage of capital, then cost of debt of debt, then cost of equity, cost of equity, then composite or overall cost of capital. ठीक, percentage as debt as percentage of capital, this is D. Equity as percentage of capital, this is E. This is KD, cost of debt. This is cost of equity, this is KE, and this is KO. KO is formula लिख लेते हैं KD into D upon D plus E plus KE into E upon D plus E. ठीक है, सो जो हमारे पास फर्स्ट सिचुएशन है, फर्स्ट सिचुएशन में हमारे पास में डेट एज परसेंटेज ऑफ कैपिटल इज 0%, इक्विटी ऑब्वियसली इज गोइंग टू बी 100%, कॉस्ट ऑफ डेट दिया हुआ है 5%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया हुआ है 12%। तो अब हम क्या कंप्यूट करेंगे, वी आर गोइंग टू कंप्यूट द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो दिस इज 5 into 0 upon 0 plus 100 plus 12 into 100 upon 0 plus 100, कितना आ जाएगा, ये तो 12% ही आएगा क्योंकि इसमें डेट तो 0 ही है, सो इट इज 12%। देन सेकेंड इज 10%, equity obviously 90%, 90%, KD here also it is 5% and KE is also 12%. Now we substitute the value here, 5 into 10 upon 10 plus 90 plus 12 into 90 upon 10 plus 90. सेम वे जो हमारा थर्ड कॉम्बिनेशन है, इट इज 20% एंड 80%। हियर केडी इज कांस्टेंट, वो सेम ही है बट यहाँ पे केई बदल गया एंड द केई इज राइट नाउ 12.5%। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे फॉर्मूले में, सो 5 into 20 डिवाइडेड बाय 20 plus 80 plus KE is 12.5 into 80 divided by 20 plus 80. Then फिर इसके बाद में फोर्थ वन, it is 30% and 70%। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि KE भी बढ़ गया थोड़ा सा,
सॉरी केडी भी बढ़ गया थोड़ा सा एंड केई भी इंक्रीज हुआ है 13%. So it is 5.5 into 30 divided by 30 plus 70 plus 13 into 70 divided by 30 plus 70. Then next combination is fifth combination. It is 40% and 60%. Here the debt increases to 6%. Equity, cost of equity increases to 14%. So it is 6 into 40 divided by 40 plus 60 plus 14 into 60 divided by 40 plus 60. Then next we are going to have जो हमारे पास next combination है sixth combination, it is 50-50. So 50% debt and 50% equity. And here the cost of debt is 6.5% and the cost of equity is 16%. So this is 6.5 into 50 divided by 50 plus 50 plus 16 into 50 divided by 50 plus 50. Then इसके बाद में next is जो हमारे पास next level है that is 60-40. 60% and 40%. And here it is 7%. It is 20%. And here overall cost of capital compute. क्यू की वैल्यूज कंप्यूट हुई हाँ 11.330%, 11%, 10.75%, 10.80%, कौन सा ये तो इसमें सिंपल क्या है 16 प्लस 6 22.5 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 11.25% आएगा ये एंड लास्ट वाला बताओ
12.2%, 12.2%। सो यहाँ पे बताओ ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा कौन सा होगा? फोर्थ वाला 30% डेट एंड 70% इक्विटी वाला हमारा ऑप्टिमम होगा। सो राइट, और क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज मिनिमम, वहां पे वैल्यू ऑफ फर्म हमारी मैक्सिमम हो जाएगी। राइट, और ये आंसर्स, ये फाइनल आंसर लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारी बार में क्या करते हैं स्टूडेंट्स ना, ये कैलकुलेशन करके इतना ही छोड़ दिया। वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया, एग्जामिनर आधा मार्क काट लेगा, 1 मार्क भी काट सकता है कि आंसर तो लिखा ही नहीं, जो पूछा वो नहीं बताया। कैलकुलेशन थोड़ी ना सिर्फ करने को बोला था। सो राइट, ऑप्टिमम कैपिटल structure is 30% debt and 70% equity as at that level composite or overall cost of capital is minimum and at that level value of firm will be maximum, value of firm will be maximum। ठीक है, कोई डाउट या क्वेश्चन? ठीक, सो होमवर्क, रोल नंबर 1, 3, 4 and 8 from class problems, ठीक। चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।